चलिए दी नेक्स्ट रिवाइज कीजिए 11.3.4 इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म। चलिए रिवाइज कर लिए दी नेक्स्ट। बहुत सारे मेथड्स हैं ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल्स। रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम डैश डैश टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। इसलिए यदि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एग्जाम्पल एम्पिसिलिन is transferred into dash dash cells, the host cells become transferred into ampicillin resistant cells. यदि हम स्प्रेड कर देते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को ऑन अगार प्लेट्स containing ampicillin, only transformants will grow, dash dash cells will die. चूँकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के कारण वन इज able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. इस केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को क्या कहते हैं? चलिए दी नेक्स्ट रिवाइज कीजिए 11.3.4 इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म। चलिए रिवाइज कर लिए दी नेक्स्ट। बहुत सारे मेथड्स हैं ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल्स। रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम डैश डैश टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। इसलिए यदि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एग्जाम्पल एम्पिसिलिन is transferred into dash dash cells, the host cells become transferred into ampicillin resistant cells. यदि हम स्प्रेड कर देते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को ऑन अगार प्लेट्स containing ampicillin, only transformants will grow, dash dash cells will die. चूँकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के कारण वन इज able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. इस केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को क्या कहते हैं? रिवाइज कीजिए 3.5।
रिवाइज कीजिए 11.3.5 ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। रिवाइज कर लिए। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चंस को। जब आप इंसर्ट करते हैं पीस ऑफ एलियन डीएनए को इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू ए बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल सेल, द डैश डैश गेट्स मल्टीप्लाइड। The next, in almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce a dash dash protein. The next, इसलिए there is a need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene gets expressed under dash dash condition. The next, the expression of foreign genes in host cell involve understanding many technical details. After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of the dash dash, one has to consider producing it on a large scale. क्या आप सोच सकते हैं of any reason why there is a need for large scale production? The next, recombinant प्रोटीन क्या है? यदि कोई प्रोटीन इनकोडिंग करता है जीन को विच इज एक्सप्रेस इन ए हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड ए डैश डैश। The next, the cells dash dash genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation techniques. क्या मैंने एनसीईआरटी का लाइन सही सही बोला है? The next, सेल्स को भी मल्टीप्लाइड किया जा सकता है इन ए कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में, wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other to maintain the cells in their dash dash most active log या exponential phase. क्या इस टाइप के कल्चरिंग मेथड्स प्रोड्यूस करता है ए लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन्स? क्या स्मॉल वॉल्यूम, जी हाँ, क्या स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स यील्ड कर देगा एप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स? The next, to produce in large quantities
The development of dash dash where large volume, that is dash dash of letter, can be processed was required. इसलिए बायोरिएक्टर can be thought of as vessels in which raw material are biologically converted into specific products, individual enzymes, etc., using microbial, plant, animal, or human cells. Are you agree with it? A bioreactor provides the best condition for achieving the desired product by providing optimum growth condition, that is temperature, pH, substrate, salt, vitamins, and oxygens. मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर कौन सा है, जो कि फिगर 11.7 में दिखाया गया है? फिगर 11.7 is simple steady tank bioreactor. B. Sparged steady tank bioreactor through which sterile air bubbles are sparged. जी हाँ, sparged steady tank bioreactor through which sterile air bubbles are sparged. माइंड कैप्चर कीजिए 11.7 का। ये स्टीड टैंक रिएक्टर यूजुअली सिलेंड्रिकल होता है और विद ए कॉर्ड बेस टू विच फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ डैश डैश कंटेंट्स। The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the dash dash. The next, alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an LE agitator system, an oxygen delivery system, and dash dash system, a temperature control system, pH control system, and sampling port so that small volumes of the culture can be withdrawn periodically. रिवाइज कीजिए 11.3.6 डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग।